Namaste students, welcome again in our next part number 11. In this video, we will discuss about the next property, that is reduction. Reduction means हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम? अपचयन. देखिए कैसे. There are so many reducing agents which are helpful for the reduction of haloalkanes. So many reducing the agents which are helpful for the reduction of haloalkanes. These reducing agents are, वो reducing agents क्या क्या है बच्चों? That is sodium ethanol, ये हो सकता है first one. Second one is nickel, platinum, palladium, this is the reducing agent. Third one is zinc, HCl, tin and HCl. Then LiAlH for lithium aluminum hydride and sodium boron hydride. These are the reducing agents which are helpful for the reaction of haloalkanes. See the reduction of haloalkanes by this reaction. This is alkyl halide, haloalkane. On the addition of hydrogen, you know that reduction means addition of hydrogen. On the addition of hydrogen in alkyl halide, in the presence of these reducing agents, like we take nickel, platinum and palladium, and on heating we will get here one H, eliminate the halogen part, that will be HX is the side product and the main product is RH. RH means here RH is alkane. So by the reduction of haloalkane, the product form will be alkanes. जब हम रिडक्शन करेंगे हेलोएल्केन का तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा. हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं. C2H5Cl. R means alkyl group, that will be taken by ethyl, and Cl, X की जगह हमने हाइड्रोजन पुट किया Cl, and on reduction, addition of hydrogen, here HCl removed in the presence of these reducing agents nickel, platinum and palladium. The product will be C2H5 then hydrogen 1 is added here, C2H6 and form HCl. C2H6 is alkane and the alkane will be ethane. कौन सी alkane बन रही है? यहाँ हमें ethane बन रही है. तो हम ये कह सकते हैं on the reduction of haloalkane, alkanes are formed. On the reduction of haloalkane, alkanes are formed. See another reaction by any other reducing agent. Here also Rx. In the presence of nascent hydrogen, यदि हम nascent hydrogen लें, H, that is nascent hydrogen, with taking 2 moles, then we will also get alkanes. Then we will also get alkanes as a main product. Here the reducing agent will be sodium ethanol, आप ये यूज कर सकते हैं, और जिंक HCl का भी यूज हम यहाँ इस रिएक्शन में ले सकते हैं. तो आपने क्या सीखा? जब हम हेलोएल्केन का रिडक्शन कराते हैं in the presence of these reducing agents, the product form will be alkane. Students, now the next method is reaction with metals. Next method is a reaction with metals. हेलोएल्केन react with metal. बच्चों जब हेलोएल्केन मेटल से रिएक्ट करेगा, then it will form so many name reactions. So many name reactions देगा ये काफी तरह की, which are very important for the examination point of view. First one is Wurtz reaction. Wurtz reaction बहुत important है. Second one is Wurtz-Fittig. Wurtz-Fittig reaction. Third one is
Fittig reaction. Fittig reaction. Fourth one is formation of organometallic compounds. Organometallic compounds. Okay, students. When alkane react with metal, gives so many reactions. First is Wurtz reaction, Wurtz-Fittig reaction, and the formation of organometallic compounds. First reaction को देखते हैं, Wurtz reaction, very important reaction. In this reaction, 2 moles of alkyl halides. How many moles? 2 moles. 2 moles of alkyl halide. I have write here Rx and another Rx here. React with metal. Which type of metal? Sodium. 2 mole of sodium. जब 2 मोल एल्काइल हैलाइड के सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे in the presence of dry ether. dry ether solvent की presence में, then higher alkanes and even number of alkanes are formed. Here R bond R plus 2 NaX. किसका फॉर्मेशन हुआ? हायर alkanes का. And the product having even number of carbon atoms. See, by an example, here we will take CH3Cl plus 2Na plus again CH3Cl. Then the byproduct will be 2NaCl. In the presence of dry ether, CH3 bond CH3 is formed. That will be ethane having even number of carbon atom. यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है? Even number of carbon atom मिल रहे हैं. Okay students, the next one is Wurtz-Fittig reaction. उससे पहले मैं आपको Fittig reaction के बारे में बताता हूँ ताकि आपको ये easily clear हो. What is Fittig reaction? Students, here we use RX, alkyl halide, but in Fittig reaction we use instead of R is AR. AR is aryl group. ARX के 2 मोल लीजिए इस रिएक्शन में. सेम वही 2 सोडियम मेटल से रिएक्शन, and the product will be AR bond AR plus 2 NaX. यहाँ हम 2 मोल सोडियम हैलाइड का रिमूवल के साथ बाइफेनिल का फॉर्मेशन करते हैं. इस रिएक्शन को एक एग्जांपल से देखते हैं हम. Here I am writing C6H5Cl plus 2Na plus again C6H5Cl. With the elimination of this 2NaCl byproduct, the main product form will be C6H5 bond C6H5. That will be biphenyl. It is also called diphenyl. In the presence of dry ether. This reaction proceeds in the presence of dry ether. हमने क्या देखा? Wurtz reaction में हमने क्या लिया? Alkyl group लिया. Fittig reaction में हमने क्या लिया students? Aryl group लिया. Then in Wurtz-Fittig reaction, one alkyl halide and another aryl halide. That means 1 mole of alkyl halide and other mole of aryl halide reacts with sodium metal and form the alkane part. See in the reaction. आपको मैं इसको रिएक्शन से क्लियर करता हूं. देखिए हमने Wurtz रिएक्शन में क्या लिया पार्ट? RX रिएक्ट विद सोडियम. Wurtz के लिए हमने RX alkyl halide. Fittig हमने क्या लिया? ARX aryl halide. दोनों से हमने एक मोल लिया and the byproduct will be same 2NaCl. This reaction also proceed in the presence of dry ether. Then the product will be main product will be RAR. Alkyl aryl product. It is understand by an example. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए हमने क्या लिया यहाँ
CH3Cl plus 2Na plus Cl एंड Ar की जगह हमने कौन सा ग्रुप ले लिया, फेनिल ग्रुप ले लिया। तो बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, 2NaCl, और बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया, CH एल्काइल ग्रुप। देन द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी टोल्यूइन। इस प्रोडक्ट का नेम क्या है, टोल्यूइन बनेगा। इट आल्सो नोन एज methyl benzene and commonly called as toluene. This reaction also proceed in the presence of dry ether. This reaction also proceed in the presence of dry ether. Okay, students. Students, the last one is formation of organometallic compounds. In this reaction, also we get organometallic compounds. What is organometallic compounds? In this organometallic compounds, we use zinc metal for the formation of organometallic compounds. How this reaction proceeds, students? See here, we take an example of haloalkane will be C2H5Br, ethyl bromide. The 2 moles of ethyl bromide on a react with zinc metal. किससे रिएक्शन करवा रहे हैं हम यहाँ, जिंक मेटल से रिएक्शन करवाते हैं। जिंक इज एन डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो मेटल है दैट विल बी जिंक। हम उसकी एल्काइल हैलाइड इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाते हैं। देन we will get an organometallic compound, and the organometallic compound will be R2Zn. R2Zn. This Zn contain the Br molecule, and also it will form ZnBr. How it will form ZnBr? Here we will take 2 mole. Here we will take 2 mole of Zn, and ZnBr2 formation occurs. But we form the organometallic compound. The organometallic compound is this R2Zn. This organometallic compound also known as Frank-Land reagent. Frank-Land reagent. बच्चों देखिए, इस रिएक्शन में हमने क्या किया, हमने हेलोएल्केन की रिएक्शन जिंक धातु से करवाई, जिंक मेटल से करवाई। यह रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होगी स्टूडेंट्स, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। इस रिएक्शन में जब हमने जिंक की रिएक्शन इससे करवाई तो हमने क्या बनाया, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया। वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, डाई एल्काइल जिंक। डाई एल्काइल जिंक। डाई एल्काइल जिंक आल्सो कॉल्ड एज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इसको हम और क्या कहते हैं, डाई एल्काइल जिंक को फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहते हैं। एंड द बाय प्रोडक्ट विल बी जिंक ब्रोमाइड। सो स्टूडेंट्स, these are the reactions with metal. ये जो reactions हैं जो कि हेलोएल्केन मेटल के साथ देता है, and the products are given here. Okay students, I think and I hope all of you understand these reactions. Okay, till then, goodbye.